First of all, thank you very much, all speakers. The presentations were excellent, thought-provoking. First presentation, so that was really, I had to think कि where we are missing. हम प्लान्स तो बनाते जाते हैं, ये तो करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर मासेस में, रूट्स में, रूरल एरियाज़ में कैसे वो चीज़ें पहुँचेगी. तो रियली दैट इज़ थॉट प्रोवोकिंग एंड वेरी गुड प्रेजेंटेशन. नूरुल नकीन मेरे क्लास फेलो भी हैं, साथी हैं हमारे पुराने. उन्होंने तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जितना बताया आपने, दैट्स वेरी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक जो गैदरिंग है इस कलेक्टिव, उसमें साइकियाट्रिस्ट भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, सब हैं. तो दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर पीपल. स्पिरिचुअलिटी पे जो टॉपिक हुआ, ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आजकल मैं काम कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी पे और उस पर. तो रियली इट इज़ वेरी हेल्पफुल कि स्पिरिचुअल नीड्स देखनी चाहिए पेशेंट्स की, जो कि वी आर मिसिंग. सो रियली दैट्स. और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लंच के बाद जो भी सेशन होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनको बिठाना. हर एक को नींद आ रही होती है. हमने भी कॉफ़ी चाय पी तो बैठ सकें. तो रियली कूडोज टू द पार्टिसिपेंट, दे वर हियर थ्रू आउट द सेशन. सो थैंक यू ऑल. अगर शाह साहब कुछ कमेंट्स करना चाहें. Okay, yeah, I'll echo what my friend and colleague Dr. Kartar said. The audience participation and as our last speaker really clearly specified that the audience had a choice and we here on the stage had no choice. But let me tell you, अगर हमारे पास choice होती भी तो हम बैठ के सुनते. इतने इंटरेस्टिंग और जैसे करतार ने कहा थॉट प्रोवोकिंग सेशंस और लेक्चर्स थे. हमने बात की साइलेंट हिल्स और फिर हम उसको लेकर गए माउंटेन्स ऑफ एंग्जाइटी पे, और फिर उसके बाद जब आप समझेंगे कि उससे ऊंची क्या बात हो सकती है, तो फिर हमें डॉक्टर साहिबा ने स्पिरिचुअल हाइज के ऊपर लेकर गए. So that was the climax of the thing. Just एक दो बातें focusing on spirituality. ये मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि we're all from Pakistan. कोई यहाँ practice कर रहा है. आपने ऑक्सफोर्ड का जिक्र किया. एक्चुअली मैंने भी स्पिरिचुअलिटी पे एक प्रोजेक्ट किया था 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के साथ, और उसके बाद हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादा बिजी हो गए. और अमेरिका में जहाँ हम अब प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर स्पेसिफ़िकली जब साइको सोशल असेसमेंट होती है तो स्पिरिचुअलिटी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एब्सोल्युटली वी कैन नॉट इग्नोर दिस वेरी near and dear to heart part of any, not just a patient but any individual, any human being. So spirituality is important. Yes, you have a question? So prayer review, yes. Yeah, prayer review on elevation of ill health. So there is a paper that was published that was more than 15 years ago. So anyway, the focus of my comment is not my paper, but the fact that spirituality is important and it's across every country, across every culture, every religion. And for decades we've been talking about the biopsychosocial model. And of course, the social aspect covers the spiritual, but it should be the biopsychosocial spiritual aspects of treatment. We cannot overemphasize this thing. Patients ko aap, regardless of your own religion and your own beliefs, always give respect to what their belief is, and you will make a huge difference in a patient's life by giving them the respect. If hamare patients wo church jate hain and we find out ke it is very helpful. Now, whether it's a mandir or a church or a masjid or a synagogue,
what is happening beyond the spirituality is the fact that they are going to a place of worship where they are intermingling with people of the same faith, importantly people that they trust, and that is probably part of the healing process. So I'll end here. Thank you. आपकी थैंक्स कि आप लोग दूर से आए और बड़ी अच्छी नाइस इन्फॉर्मेशन थी. वेरी इम्प्रेसिव ऑल ऑफ अस. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. सबसे पहले आपकी मैं बहुत टच्ड हूँ सर आपकी ऑब्जर्वेशन से और द वे यू कंडक्टेड द सेशन एंड द वे यू फेल्ट द पेन ऑफ द पीपल living far flung areas, not getting enough resources, and I'm so touched by your presentation. I wish I could hear you more. And yes sir, bilkul professor sahab, yes sir, the valleys and all that, speaking valleys, speaking hills, I think so. Sir, professor sahab, آپ میرا خیال ہے آپ نے وقت کا خیال کر کے چیزوں کو سمیٹا. مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں آپ سے اور سننا چاہتا تھا. دا وے یو ور کنڈکٹنگ اٹ, دی انویلڈ پارٹ آف دی پریزنٹیشن واز ناٹ ویلڈ. تو مجھے میں چاہتا تھا اس پہ آپ اور بات کرتے ہیں, ہمارے آڈینس سننا چاہتے ہیں. اور پروفیسر خدیجہ صاحبہ, میڈم آپ کو آلریڈی انویٹیشن مل گیا ہے پیپلز میڈیکل یونیورسٹی جہاں سے میرا تعلق ہے. موتی رام بھاٹیا صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. We would definitely love to host you there and engaging you with our students over there. So thank you very much. I just want to share one more thing briefly. I was the part of a research paper, Shrines of Faith Healing Abroad, and we had discovered over 50 and more than 50 shrines, and we observed the behavior of the people who were visiting there. تو ایک کویشچن میرا یہ تھا کہ کیا شرائنس فیتھ کو یا اسپریچول کو ہیل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. آپ کا کویشچن ہے کہ کیونکہ ایویڈنس تو ہے نا, کچھ انیکڈوٹل ایویڈنس ہے, کچھ ہے, اور لیکن جو آپ کا بھی اور سب کی ریسرچ بہت ویلڈ ہے اور ظاہر ہے ہم وہاں جا کے اسٹڈی کریں گے. لیکن میں پھر ایمفیسائز کروں گی کہ اس اسپریچولیٹی نیڈ اسیسمنٹ اور اس کی مینجمنٹ کو ہم نے کلینکل سیٹنگس میں لے کے آنا ہے, ان کے ساتھ لیزون رکھنا ہے, لیکن ہم نے اس کو اپنے اندر لے کے آنا ہے, اس کو ایز پارٹ آف سیکائٹرک اسیسمنٹ, رسک اسیسمنٹ اس کو لے سکتا ہے. اور جب ہم اس کو اپنے ٹریٹمنٹ کیئر پلان میں اسپریچول کیئر بھی ایڈ کریں گے تو اس کا بالکل ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. ہمارا نیٹ ورک ڈیولپ ہوگا جہاں جہاں سے ہے تو, اور ہمارا جو ہے ریسورسز بلٹ ہوں گی ہماری ڈیفینیٹلی. اور آپ کی جس طرح کی باقی ریسرچز ہیں ان سے ہم لے کے تو اس کو ہم پھر یہاں پہ لا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میرے ٹیچرس نے اور میرے سینئرز نے جو بریف کمنٹس دیے ہیں اس سے زیادہ میرے پاس کوئی ایسے ورڈس نہیں جو میں کہہ سکوں. بہرحال دیر از نائس پریزنٹیشن.